So I'm kind of staying here when almost no one is staying here. So kind of get the property all to ourselves, or myself. The view of the ocean is really calming. Over there, the view of the mountain. It's very grounding. I'm here when basically no one else is here. There's only like 3 or 4 guests in the whole building. So, kind of get the place to myself. There's a swimming pool. Oh my god, and it's on. I could get a pool all to myself. Wow. Oh my god, they have a... I gotta bring my wife and kids here. I gotta bring other people here. You guys need to come here. Wow. Look at that. Maybe I'll come at nighttime. I don't have clothes. But whatever, I'll figure it out. Gotta do something. Enjoy this beach pool. Oh, amazing. Let's sit in the water, overlook the port area and the fisheries. Oh, rooftop pool. Well, I guess, yeah. Oh, so mesmerizing. Just sit and enjoy the view of the cove. And the port. I went to the garden side before, but I'll go again to show everyone here. And it has a shower to wash off after you get out of the pool. There's the front side of the building. That's where I'm staying. Gwadar is absolutely gorgeous. Gorgeous, gorgeous places. They have a poolside barbecue. This would be great as a conference or convention center. Get like corporate retreat site. I think there needs to be more of a corporate conference vibe in Pakistan. There probably is already. I'm not here, so here's the view of the side. It's the business center. Coming here for meetings. Amazing. And another boardroom, but that one was much nicer.
Okay. Place for a conference for about 100 people. It's a beautiful view. There's the exit. This is the lobby. Beautiful building. This is the other side, which is the garden side. And there's the port. And one of these buildings is a greenhouse, so it's made by a Chinese company. It would be great to build a cliff top resort up there. Doing business in Pakistan while living abroad isn't easy. Heck, doing business in Pakistan isn't easy. Partners go silent, contracts get broken, payments get delayed. At Tariq Law, we help overseas Pakistanis resolve commercial disputes back home quickly, professionally, and without having to step foot in court in Pakistan. We work with vetted Pakistani counsel to manage breach of contract issues, partnership fallouts, payment disputes, and other types of commercial transactions, while we handle communication and strategy from here in New York City. Don't let your hard-earned investments fall apart. Visit tariqlaw.com/Pakistan to schedule a confidential consultation today. जी तो आप बोल रहे हैं कि आप यहाँ से ग्वादर से ही हैं? जी हाँ। तो आप यहाँ ही पैदा हुए थे? पैदा यहाँ नहीं हुआ हूँ, लेकिन बचपन यहीं से गुजरा है। बचपन यहीं से गुजरा है। तो आप बताएं कि ग्वादर कैसा है? अच्छा है। अच्छा है। पहले से बेहतर है। आप तो बोल रहे हैं कि आप पहले आप तो यहीं पढ़े हुए हैं ना? हाँ। तो आपको अंदाज़ा होगा कि पहले कैसी चीज़ें थी और अब कैसे हैं। तो पहले आप अभी बोल रहे थे कि यहाँ पे इतनी सहूलतें नहीं है। हाँ। लेकिन पहले से ज़्यादा तो है ना? पहले से ज़्यादा थोड़ा बहुत है। हाँ, लेकिन और हो रही हैं चीज़ें, स्लोली हो रही हैं, पर हो रही हैं। स्लोली हो रहा है, लेकिन ये ना होने के बराबर में है ना? हाँ, लेकिन ना होने के बराबर में से बेहतर तो है कि कदम एक थोड़े से अभी तक हो रहे हैं। मैं अभी पोर्ट घूमने ही जा रहा हूँ, टूर मारने। तो I wanted to get आपका सेंस कि ये ग्वादर कैसा था पहले और अब कैसा है। पोर्ट बना हुआ है, ये बात है, पहले से बेहतर है, पोर्ट भी बना हुआ है ना। हाँ, कल मैं कश्तियों पे गया था, मैं देखा कि वो लोग 2 महीने के लिए जा रहे हैं, 2 महीने के लिए जाते हैं, कोई 3 महीने के लिए जाता है मछली पकड़ने।
अब पोर्ट भी आ जाए यहाँ पे तो इंडस्ट्री बढ़ जाए। ये तो अच्छा है, लेकिन ये हो जाए ना तो अच्छा है, लेकिन ये हो नहीं जाएगा ना। यहाँ देखो तो समंदर में अभी कितना सख्ती हो गया है मछलियाँ पकड़ने के लिए, इधर उधर डालर हैं वगैरह, ये गरीब आवाम के लिए तो। और तेल का भी काम बंद किया हुआ है। हाँ, तेल का काम बंद है। बात है ना ये। तो आपको क्या लगता है आगे जाके ग्वादर में और तरक्की तो होगी ना इंशाल्लाह? हम यही सोचते हैं हो जाए, भी खुश हैं कि तरक्की हो जाए, काम हो जाए, रोजगार हो जाए, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। So I'm on my way to see the Gwadar Port now. Luckily, I met someone who knew the director of operations here at the port, and so he is going to arrange for a private tour. But we are here now at the port to go inside and get a sense of all of these buildings that I've seen from my view at the hotel, but now see live and up in person. And I can kind of ask questions and kind of figure out what's going on down here and when is it going to be more ready to go. Running a business between the United States and Pakistan, then you know how complicated things can get. Contracts, payments, partnerships, compliance in two completely different legal systems. At Dark Law, we work with entrepreneurs and companies doing business across borders. We work with you to draft contracts, negotiate favorable deals, protect your interests, and plan for long-term growth on both sides of the globe. Whether you're launching a product, signing a supplier agreement, setting up a US entity, or expanding into Pakistan, we are your legal partner. Tariq Law, where cross-border business gets real support. Visit tariqlaw.com/Pakistan to book your strategy session today. So I'm here with the Director of Operations at the port, Mr. Munir. Assalamu alaikum. हेलो। और आप बताएं इंग्लिश में या उर्दू में बात कर लें हम बात कर लेते हैं, उर्दू में कर लेते हैं। इस वक्त हम हैं जी इस वक्त मैं टर्मिनल पे हैं, इसे कहते हैं ग्वादर इंटरनेशनल टर्मिनल। ये हमारी तीसरी कंपनी है। यहाँ पे जो हमारा कंसेशन होल्डर है वो चाइना ओवरसीज पोर्ट्स होल्डिंग कंपनी लिमिटेड है। हाँ, अच्छा, ये हमारे पास जो हमारा कंसेशन होल्डर है, जो पोर्ट ऑपरेटर जिसे हम कहते हैं, वो है चाइना ओवरसीज पोर्ट्स होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। और इसमें उनकी सबलिट्स यहाँ पे उन्होंने कैम्ब्रेला के नीचे 3 कंपनीज काम करती हैं। एक ग्वादर इंटरनेशनल टर्मिनल कहलाता है, दूसरा इनकी ग्वादर मैरीन सर्विसेज कहलाता है, और जो ये टग बोट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये वही ग्वादर ये हमारी ग्वादर मैरीन सर्विसेज के हैं। और तीसरी इनकी कंपनी है ग्वादर फ्री जोन के हवाले से। और इस वक्त हमारे पास जो पोर्ट है, पोर्ट के इस वक्त हमारे पास 3 बर्थ्स हैं, और जिसमें हमारी लोडिंग कैपेसिटी है वो है 50,000 टन की, 50,000 टन की लोडिंग कैपेसिटी है। यानी कि एक डे नो इसमें जो शिप आती है वो मैक्सिमम इनकी जो डेड वेट टनेज जिसे हम कहते हैं वो 50,000 टन तक कार्गो ला सकती है, जो हमारा डिज़ाइन लोड है यहाँ पे। और इस वक्त हमारे पास बर्थ भी 3 ही हैं, और माशाल्लाह से और प्लान है कि इसको बिल्कुल हमारे जो नेक्स्ट फेजेस में असल में अभी तक अंडर वो क्या कहते हैं यूटिलाइज हैं, कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे पास जो ट्रेड चल रहा है अफ़गानिस्तान के साथ हम कर रहे हैं, ट्रांजिट ट्रेड। यहाँ से यूरिया जा रहा है, कार्गो आता है, यहाँ पे हम स्टोर करके फिर इनको शिफ्ट करते हैं। और माशाल्लाह से बाकी ज़्यादातर पहले कंटेनराइज बिज़नेस भी चलता रहा है हमारे पास। और यहाँ से हमारी जितनी भी चाइनीज़ हमारे डेवलपमेंट के हवाले से बहुत सारी चीज़ें चलती रही हैं, वो सारे यहाँ से थे। हाँ। जी जी बिल्कुल। तो अब उम्मीद है कि बहुत जल्द से जल्द यहाँ पे अब काम करने लग जाएंगे। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हम अपने ट्रांजिट ट्रेड्स पे, ट्रांसशिपमेंट पे और उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसमें बहुत सारी चीज़ों पे पाकिस्तान ले करता रहा है, लेकिन अभी स्पीडी काम सारा चल रहा है इंशाल्लाह। और बाकी अनकरीब इंशाल्लाह तमाम जब पाकिस्तान की तीनों पोर्ट्स हैं कोशिश में हैं, इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट आएगी।
यहाँ का है, एक कराची का कराची है। पोर्ट ट्रस्ट 2 कराची में है, दो है वहाँ 2 पे। कराची में कराची पोर्ट ट्रस्ट और पोर्ट कासिम अथॉरिटी, और तीसरी पाकिस्तान की जो पोर्ट है वो ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी है, जो कि हम ईरान बॉर्डर के करीब हैं। 90 किलोमीटर पे यहाँ ईरानियन बॉर्डर है। मुझे तो इतना पता नहीं था कि ईरान इतना करीब है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ईरान का भी यहाँ पे सफ़र करके जाता इंशाल्लाह, लेकिन अगली दफ़ा शायद। जी जी, इंशाल्लाह। यहाँ से 90 किलोमीटर पे है, ईरान का बॉर्डर है यहाँ पे, और बॉर्डर ट्रेड भी होता रहा है, हमारे यहाँ चलती है। और माशाल्लाह से बाकी ओवरऑल ग्वादर को तो आपने विज़िट कर हाँ लिया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बिल्कुल। Gwadar is बहुत ज़बरदस्त जगह है. Definitely a place to come visit with yourself, your family. Come see it. You'll experience the welcoming people, the beautiful landscapes, the hospitality, and you will see for yourself what it is. The people keep talking about security problems. There are no security problems on the ground. You come here day to day. Alhamdulillah, everything is great. People are nice. People are welcoming. You can great food like we did last night in Shinwari, and the people are just amazing. Alhamdulillah, mashallah, mashallah. Allah ताला में पाकिस्तान को और कामयाबी दे और जल्द से जल्द हमारे मुल्क की हिफाजत रखें, हमको मौका दे हमारे मुल्क के तरक्की करने में। और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे ऐसी जगह है कि ग्वादर के यहाँ पे रिजॉर्ट्स होने चाहिए, यहाँ पे ट्रेड बढ़ना चाहिए, यहाँ पे टूरिज़म आना चाहिए। इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान में जल्द से जल्द यहाँ पे टूरिज़म का वापस चलने लग जाए इंशाल्लाह ग्वादर में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ओके बस। तो आप मुझे पता, आप तो यहाँ के लोकल हो, तो क्या सूरत हाल है ग्वादर की? मतलब कि कोई उम्मीद है कि आगे जाके यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट होने वाली है? शायद होगा, लग रहा है कि नहीं होगा। जब से हम देख रहे हैं ये जगह ऐसी ही है। तो आपके कोई जानने वाले हैं जो मछली के बिजनेस में है? मछली के बिजनेस में हमारे नहीं है, और डीजल के बिजनेस में है? डीजल के है। तो जब डीजल चलता है तब यहाँ पे ऐसा लगता है कि जब डीजल चलता है तो तब लोकल्स का जो लोकल्स हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। बहुत फायदा होता है। काम यही है बस, डीजल का और फिशिंग का। हाँ, पोर्ट तो एक ये तीसरी अब इंडस्ट्री बन रही है यहाँ पे एक लिहाज से। हाँ, लेकिन पोर्ट में तो अभी तक काम नहीं है लोकल लोगों के लिए ना। लोकल लोगों के लिए नहीं है, वो चाइनीज़ आ रहे हैं। और लेकिन अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है और पूरा अंडर इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हाँ, काम नहीं है लेकिन पोर्ट में लोकल काम, हाँ काम। और ये फिशिंग का है ना, फिशिंग का इलाका है। मुझे ये से बात करूँ, बोट पे जाएं क्या? बोट पे चलोगे? वहाँ पे हाँ, कश्ती पे चलोगे? कश्ती देखते हैं। मुझे फिशिंग करने जाना था, ये लेके जाएंगे मुझे अभी? पता नहीं। चले पूछेंगे, पार्क करो ऐसी जगह पे हम फिर फिश बोट पे जा सके। पार्क करेंगे लेकिन ये शायद हमको नहीं लेके जाएगा। ठीक है, मैं पूछता हूँ उसे कैसे। Give this a shot. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपको वीडियो बना तो मैं पहली दफ़ा ग्वादर आया। मैं चाह रहा था कि मैं ये मछलियों की कश्ती पे जाके थोड़ा सा घूम के आऊँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? या मछली पकड़ के आए हैं?
ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो मछली आप, ये कौन सी मछली है? इज्जत। हाँ, तो ये आप अभी पकड़ के अभी फ्रेश आए, तो कितना दूर जाना पड़ता है पकड़ने के लिए? 2-3 घंटे सफर में जाते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे जाना हो तो पूरा दिन लग जाएगा, फिर अभी बाकी का दिन लग जाएगा मुझे। हाँ, और वैसे आप लोग कब जाते हैं, सुबह के टाइम पे जाते हैं? सुबह जाते हैं, इस टाइम आते हैं। कभी अगर शाम को जाते हैं तो असर के बाद जाते हैं, सुबह फिर सुबह आते हैं, पूरा रात समंदर पे। और मैं देखा कि उस तरफ कश्तियाँ थी जो 2-3 महीने के लिए जाती हैं। जाती है बिल्कुल, पिशकाल पे, जीवनी पे हाँ, जाते हैं। और यहाँ पे तो आप बस लोकली आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आप बस यहाँ पे लोकली इसी एरिया में जा रहे हैं? बिल्कुल, तो आप हमारा इसी, ज्यादा से ज्यादा एरिया है, हम जाएंगे गंज तक, गंज से आगे नहीं जाएंगे। वो कहाँ है? गंज जीवनी के साइड पे, सही है। पिशकाल से थोड़ा आगे निकल जाएंगे और गंज आएगा। ठीक है। गंज और आप ये नेट डालते हैं और मछली पकड़ते हैं, ये नेट जो है वो आपस में जुड़ नहीं जाता है? नहीं नहीं, हर कोई अपना देख के फेंक देता है ना। ये बांगड़ा का जाल है, क्या है? बांगड़ा का जाल है ये। सही है। नहीं, लेकिन जैसे ये आपस में नहीं जुड़ जाते, आपस में नहीं। नहीं सही है। तो यहाँ पे तो बहुत कश्तियाँ हैं, ये सारी अभी सुबह की गई, ये वापस आ गई हैं, और शाम के वक्त ये बस। कुछ शाम को जाएंगे, सुबह फिर आएंगे। और ये ज़्यादातर पानी में नहीं रहती हैं, ज़्यादातर नहीं, लोग। बाहर निकालते हैं। तो क्या कितने लोगों को चाहिए पानी में डालने के लिए? इसको 4-5 बंदे होते पानी में। ये पानी में चले जाएगा? पहिए हैं ना, हाँ, और वापसी में भी ऐसा ही है? ऊपर रखेंगे। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। आपको कैसा लग रहा है ग्वादर? बहुत प्यारा। जितनी मेरे यहाँ पे आके आंखें खुली हैं कि ग्वादर क्या चीज़ है। लोग इतना नेगेटिव प्रोपेगेंडा ग्वादर के खिलाफ हुआ है कि लोगों के दिमाग के अंदर खौफ है कि ग्वादर क्या चीज़ है। लेकिन आप असली में खुद ही आएँ ग्वादर और खुद ही देख के जाएं, खुद ही लोगों से मिलें, तो लोग ये जगह आने की, फैमिली को लेके आओ, दोस्तों को लेके आओ, आओ घूमो फिरो, जियो, ऐश करो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का हमारा हिस्सा है। Doing business in Pakistan while living abroad isn't easy. Heck, doing business in Pakistan isn't easy. Partners go silent, contracts get broken, payments get delayed. At Direct Law, we help overseas Pakistanis resolve commercial disputes back home quickly, professionally, and without having to step foot in court in Pakistan. We work with vetted Pakistani counsel to manage breach of contract issues, partnership fallouts, payment disputes, and other types of commercial transactions, while we handle communication and strategy from here in New York City. Don't let your hard-earned investments fall apart. Visit directlaw.com/Pakistan to schedule a confidential consultation today. I'm here visiting the CM house in Gwadar, which is amazing because my driver told me that they wouldn't let you in, and I said, no, you know, I'm from Karachi, and but my English is pure, and my Urdu is, ठीक है, चलती है यहाँ पे, ठीक है, मेरे पास बिलावल भुट्टो की उर्दू है, बिलावल, we need to get your act together, but मेरे पास बिलावल भुट्टो की उर्दू है, लेकिन still great experience being in Pakistan. लोग मुझे खुशी खुशी मिलते हैं, लोग स्माइल करते हैं, मेरा मुल्क है, मेरे लोग हैं, मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ, मेरा ग्रीन पासपोर्ट है, तो अपनी ज़बान है, अपने लिहाज से आपको अपने मुल्क की खुद ही हिफाजत करनी है। तो ये है सीएम हाउस यहाँ पे, बहुत बहुत प्यारा लग रहा है, इट्स रियली ग्रेट। और इसकी बाउंड्री वॉल के ऊपर ही यहाँ पे अगर मैं आऊँ, the beach, man, you could just get used to sitting by the beach all day and get like Starlink or something, and then there should be a flight from here to Skardu and just go to the mountains from the beach, and I could just do beach and mountains,
don't really need the city anymore in my life. Amazing. It's just so peaceful. Sit here. Oh, this is the house they're building for the chief minister, the CM. I guess that's the old one. वो भी काफी अच्छा है, लेकिन छोटा होगा. यहाँ पे अब थोड़ा सा बड़ा है. Meeting rooms भी होंगे. You know, when you have events at the CM house, you need a establishment that is big. ये I guess अभी का CM house है. ये बस बाहर से डोर मारेंगे अंदर कि मैं इजाज़त नहीं लिया हूँ. I just wanted to come see it. I saw it on the side of the road. So, a garden है माशाल्लाह इसका. And there's a gate to the beach. और ये है renovation of Chief Minister Annex Gwadar, inaugurated by Mr. Zahid Salim, Principal Secretary to Chief Minister of Balochistan, on the 13th of November 2020. So this is the annex that the Chief Minister's. Oh, this is the Chief Minister's annex here. So nice walkway to the private beach, essentially. This could be a life, man. Come be the Chief Minister here, or be some sort of government official, and dedicate your time and knowledge and expertise to the development of the people of Pakistan. And at the same time, you can live a relatively luxurious lifestyle. Yes, there is poverty in this country, and there's things, but that's why you're here, to try to uplift the people and help them in many ways, every way. Stop asking what can the country do for me, and ask what can I do for the country. That is the vision of Naya Pakistan that Imran Khan was trying to preach about, is that ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Look, there's a nice, beautiful house right there, right across from the CM house. That looks like it's in good shape. It looks like it's recently built with a great architect. So people are building, people are living, people are doing in Gwadar. You just have to see that vision and be willing to build that vision together as a nation, under one flag. अब हम जा रहे हैं समंदर का किनारा, end of the ocean, the edge of the ocean, Of the people with proper Urdu are gonna hate me, but it is what it is. Samandar ka kinara, the edge of the ocean. So I'm gonna head there. और sunset point ये नहीं है ना, sunset point दूसरी तरफ है, Hammerhead के पास. ऊपर है sunset point. वो वाला आगे, वो किनारा, वो आगे edge पे. ओ यहाँ पे तो ऊँट भी है. यार चलो बैठते हैं ऊँट पे. बैठोगे? अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है बेटा? कैसे हो? क्या हाल है बेटा? अस्सलाम वालेकुम. कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम. ऊँट के क्या सवारी कर रहे हो? कितने का है? 100 रुपये. कहाँ तक? नजदीक. चलो. एक सेकंड. अल्लाह. ये पकड़ो. On a camel.
Oh, this is the life in Pakistan. On a camel, by the ocean, by the clean ocean. Amazing. Running a business between the United States and Pakistan, then you know how complicated things can get. Contracts, payments, partnerships, compliance in two completely different legal systems. At Dark Law, we work with entrepreneurs and companies doing business across borders. We work with you to draft contracts, negotiate favorable deals, protect your interests, and plan for long-term growth on both sides of the globe. Whether you're launching a product, signing a supplier agreement, setting up a US entity, or expanding into Pakistan, we are your legal partner. Tariq Law, where cross-border business gets real support. Visit tariqlaw.com/Pakistan to book your strategy session today. Oceanfront villas right there. Come find out about that. That's what I would want. Oceanfront, beach view, villa. Here, private gated area, or there's a private area. There's a private beach. Oh, that's incredible. Just come spend winters on your picture villa. यहाँ पे क्या घर बन रहा है आगे? घर बन रहा है? वहां तक लेके चलो, वहां तक लेके चलो। नहीं चलना है, वहां पे चलो, वहां पे चलो। वहां पे घर दिखाओ मुझे, घर तक चलो। View, weather, the sun. Oh, it's just incredible. Incredible. What a great idea to come to Gwadar and not listen to all the people telling me to be afraid and be afraid and be afraid of Gwadar. Just come, spend time here, learn for yourself, and come experience Gwadar for yourself. Or else, you're gonna be on a nice, sandy, clean beach. It's a beautiful ocean view. Has a nice breeze. Family friendly. There aren't people. There aren't tons of, chichurapani, family oriented vibes. In Pakistan, if you're Pakistani, this is your country. If you're not Pakistani, come visit. Just check it out. Maybe you want to make this your country, like Onaja Robinson. She got sent back, but you get the vision, you get the idea. Oceanfront homes, villas. Just sit outside the porch, enjoy the view and the weather. It's just simply incredible. Honestly, I cannot really express this in words. The feeling of being in like a calm, soothing, warm, tropical environment when it's really cold in New York City. So definitely come visit Gwadar in the winter time. Maybe this is going to be my new winter White House.
So here at the district court in Gwadar, I didn't come in time to get here to get a tour of the inside of the facilities, but I was able to convince a guard to let me walk the grounds and just kind of admire the facility. In the future, I'd love to set up a tour of the facilities and of the courthouse, and see if we can even maybe get a delegation of people here. Maybe Karachi people can come here, maybe people from overseas, from this group called Pani in New York. And things can surely be done. The rule of law is the bedrock of civilian society, or else there is martial law only. The judiciary requires the rule of law to be upheld, or else there is no law, there is no order, there is no civilian society, there is no property rights, there is only might is right. Right needs to be right. Beautiful facility. Feel the tranquilness here. I was stopped from going into the little garden area. I did see a mention of Justice Ghazi Faiz Isa, who is no longer the Chief Justice of Pakistan, but he had a very unfortunately impactful time as Chief Justice of Pakistan, and caused great damage to the institution of the Supreme Court, and facilitated the deconstruction of the judiciary, which is kind of symbolic because it just see this area that I guess is the old courthouse, or maybe the renovating courthouse, going through a deconstruction, and then a new courthouse that emerges. Where is thing? It's like a Red Cross building over there. It's interesting. Maybe that's the hospital. You can check that out. Sun, sky, tall sky, big sky. I think we need a change in building equipment here, because concrete is just a too concreteness. It's a little bit garden, road. There's a road inside.
Says Mr. Justice Ghazi Faizi Saab, Honorable Chief Justice of the High Court of Baltistan. Interesting, I didn't know that he was from Baltistan. Is that Pakistan? That says High Court. High Court of Baltistan. It's interesting to see the history of these judges who make very impactful rulings. The rule of law, like I was mentioning, is the bedrock of civilian society. Part of the reason why Pakistani civilian society is not strong, it's not mazboot, is because judges have too often succumbed to the pressure of the army to rule in the favor of them, of what their interests are. And that has caused civilians to not be as powerful as the military, not be as mighty as the military, not be as dignified or successful as the military. Doing business in Pakistan while living abroad isn't easy. Heck, doing business in Pakistan isn't easy. Partners go silent, contracts get broken, payments get delayed. At Direct Law, we help overseas Pakistanis resolve commercial disputes back home quickly, professionally, and without having to step foot in court in Pakistan. We work with vetted Pakistani counsel to manage breach of contract issues, partnership fallouts, payment disputes, and other types of commercial transactions, while we handle communication and strategy from here in New York City. Don't let your hard-earned investments fall apart. Visit directlaw.com/Pakistan to schedule a confidential consultation today. This here is the defense of Gwadar. This is in the kind of town, in this share area, the city area. But this is the area that's going to become the defense of Gwadar. It's called Newtown. The Pakistan Army Navy's there. It's right by CM House that we visited earlier. There's that house that I showed you guys earlier. I can kind of zoom in there. That was that house. Now you can kind of see the rest of Newtown. This is what they're saying is going to be the defense of Gwadar area that is going to be all housing, a nice 500-yard housing society they're building. And there are a bunch of homes already made. Maybe like 20% of the homes are already, people are living here. Look, there's cars here, people are living here. People are living here, they're doing business here. That's how it works. I mean, sure, people are going to come and leave their house empty, some of them, but others of them are going to build it and sell it. This is prime for a construction company to just come and do construction. Yes, there's a lot of empty lots, but there's also a bunch of homes already made or in the strong process of being made or almost done. So these aren't small homes, these are massive 500-yard homes that are good for like a khandan of people. So it means people are going to be shifting here. Yes, it's a slow process. Yes, there are things. Yes, there are problems, but where there is a will, where there are people putting their money, where there's a community of people developing, there is a way. There is a possibility of success. You know, Allah subhanahu wa ta'ala has the way of success. All you can do is put in effort, but you can see the effort is definitely being made here. लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क की अच्छाई हो और डेवलपमेंट हो और इंडस्ट्री आए और लोग चीज़ें हो रही हों. There's some cows. Sheep. Goats.
घर तो माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हुए हैं। ये इतना ना पता नहीं चलता है कि जब मैं ऊपर पीसी से ऊपर से देखो ना, इतना पता नहीं चलता है कि घर जो वाकई हैं यहाँ पे वो कैसे हैं। ठीक है, दूर से नज़र आता है कि ये इलाका है। जैसे अभी अभी देखें तो पीसी वहाँ पे होगा ना, पहाड़ों पे कहीं। लेकिन ये तो असली बेसिकली शहर बन रहा है। ठीक है, शहर नहीं लेकिन एक सबर्ब बन रहा है कि लोगों के घर यहाँ पे हैं। जैसे कराची में ऐसा है। कराची तो आ चुके हो ना? हाँ। कराची में भी तो ऐसा ही है कि डिफेंस में घर ऐसे ही बने हुए हैं। तो ये बेसिकली ग्वादर का डिफेंस बन रहा है। ठीक है, टाइम लगेगा लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें बन रही हैं, और लोग यहाँ के जो लोकल मजदूर हैं उनको जॉब्स मिल रही हैं यहाँ पे। वो काम करके घर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। Running a business between the United States and Pakistan, then you know how complicated things can get. Contracts, payments, partnerships, compliance in two completely different legal systems. At Tariq Law, we work with entrepreneurs and companies doing business across borders. We work with you to draft contracts, negotiate favorable deals, protect your interests, and plan for long-term growth on both sides of the globe. Whether you're launching a product, signing a supplier agreement, setting up a US entity, or expanding into Pakistan, we are your legal partner. Tariq Law, where cross-border business gets real support. Visit tariqlaw.com/Pakistan to book your strategy session today. जी हम आए हैं यहाँ पे, आप सर बताएं। अच्छा, हाँ, तो आप बताएं कि यहाँ पे मशहूर सबसे ज़्यादा चीज़ क्या है? मतलब यहाँ पे इलाका मछलियों का है ना, तो मछली सबसे ये ज़्यादा। सर्फ फिश है और हमारे पास सर्फ फिश चल रहे हैं और फिश फ्राइड ये चल रहे हैं। फिश फ्राइड, किंग फिश। मेरे अम्मी अब्बू को ना किंग फिश बहुत पसंद है, तो हम ऐसा करते हैं कि फ़िश फ्राइड ही कराते हैं जी। और मज़ेदार लेके आ जाएं आप। और उसके साथ कुछ स्टार्टर्स के लिए क्या है? स्टार्टर हमारे पास यही है, स्टार्टर है सर। मछली स्टार्टर जी यही है। जल्दी आ जाती है, मछली है तो तेज़ी से पक जाती है। जी जी सही है, तो आप ऐसा करें कि फ्राइड फिश फ्राइड लेके आ जाए। फिश फ्राइड कर दो। हाँ, गोरे पनीर ले आओ जी। गोरे पनीर जी हाँ, गुड़ में बन रही है, गुड़ में। हाँ फिश फ्राइड गुड़ में बन जाता है। हाँ, सही। ऐड कर दो सर। हाँ, ऐड करने सर, प्लेट होते हैं एक 2% के लिए। हाँ हाँ, ऐड काफ़ी है ना। हाँ, एक कर। So I'm gonna get fish fried, which is a kingfish. You know, my parents love kingfish, and we've had it since growing up as a child in New York City. So here we're gonna have some fish fried, and here comes the fish. Star attraction here. That's it. This is fried fish, kingfish. ज़बरदस्त लग रहा है कि बहुत मज़े की लग रही है चटनी के साथ।
Not American. Me? So anyone who knows me knows that normally I'm not a fish person, but we are at a seafood place across the street from the ocean. We have to try seafood. Fried so makes it a little easier, but it's still fish. I like it though. You know, just being a fish snob, just a snob in general. The roti wala's not here yet. So we got some white rice. I haven't had white rice in. Oh, I had white rice recently actually. And chutney. मैं ना वैसे मछली खाता नहीं हूँ। मैं वैसे मछली नहीं खाता। लेकिन आए हुए हैं यहाँ पे तो खाना तो चाहिए। ऐसे ही तो पता चलेगा क्या यार खाने कैसे। लेकिन माशाल्लाह अच्छी है मछली। I mean, look at these guys. Yeah, look at the view. It's just incredible. तो भाई यहाँ पे व्यूज इतने अच्छे हैं, इतनी प्यारी जगह है, इतनी मज़े के हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार सकते हो, घूम सकते हो, देख सकते हो। तो आप बताएं यहाँ पे क्यों नहीं लोग आ रहे हैं? यहाँ पे सिक्योरिटी का मसला है। क्या क्या हालत कभी कभार खराब हो जाते हैं ना, लोग डर जाते हैं इसलिए। कौन से लोग? जैसे क्या बाहर क्या के सीन लोग। क्या सीन हो? तो यहाँ पे ग्वादर के अंदर हुआ है? क्या हुआ है? बहुत चीजें हुए हैं। हम बता तो नहीं सकते लेकिन जैसे टेररिज्म, हाँ, टेररिज्म का हुआ है। चाइनीज को अटैक किए हैं। हाँ, ये हुआ है, ब्लास्ट हुए हैं। इस तरह की चीजें होती है तो बाहर के लोग नहीं आ सकते हैं। लेकिन मैं कराची से हूँ, वहाँ पे तो और सिक्योरिटी का मसला है। यहाँ पे तो सिर्फ 3 लाख लोग रहते हैं, वहाँ पे तो 3 करोड़ लोग रहते हैं। 3 करोड़ लोगों को चलाना ज़्यादा मुश्किल है। ये बात है। लेकिन और वहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत सीन है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जी रहे हैं। अमीर माशाल्लाह आप लोग भी जी रहे हो, ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं जी रहे हो। लेकिन इतनी प्यारी जगह है और मुझे बस लग रहा है कि लोगों को बस पता ही नहीं है क्या सीन है। मैंने सुना है वज़ीरिस्तान भी बहुत प्यारा है। मैं अभी तक वज़ीरिस्तान नहीं गया, लेकिन मैं सुना है कि वज़ीरिस्तान भी बहुत अच्छा है। तो इधर बहुत अच्छे हैं। तो टूरिज़्म के लिहाज से पाकिस्तान को तो नंबर 1 पे होना चाहिए। ये बस जगह है कि बस बैठा रहूँ। मैं यहीं आ जाऊँ रात में।
पीसी से रात को निकलूँ और बस पैदल आ जाऊँ यहाँ पे तो सेफ होगा ना, कोई मसला तो नहीं है। मैं रात को भी निकलूँ पैदल निकलूँ, मैं बोलूँ जा पैदल जा रहा हूँ वॉक पे, तो कोई मुझे रोकेगा तो नहीं। शायद ना रोके। होटल वाले क्यों रोकेंगे? लेकिन ठीक है, चल आगे चलते हैं। Doing business in Pakistan while living abroad isn't easy. Heck, doing business in Pakistan isn't easy. Partners go silent, contracts get broken, payments get delayed. At Direct Law, we help overseas Pakistanis resolve commercial disputes back home quickly, professionally, and without having to step foot in court in Pakistan. We work with vetted Pakistani counsel to manage breach of contract issues, partnership fallouts, payment disputes, and other types of commercial transactions, while we handle communication and strategy from here in New York City. Don't let your hard-earned investments fall apart. Visit directlaw.com/Pakistan to schedule a confidential consultation today. So I'm here at this amazing cliffside view, and I see all these people, and I'm thinking to myself, and I asked the driver, I said, what security issue? Everyone keeps talking about a security issue. There is no security issue. If you're a big shot, or if you are hated by some bunch of people, then of course you got a security issue. And just like in Karachi, where you gotta go or walk, drive around with guards, you gotta do the same thing over here. But agar aap koi aam banda ho, there's no security issue over here. Yes, there's army over there, and I thank you for serving the nation and keeping the country safe. But for the average person, ये लोगों के लिए कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है यहाँ पे। आपके अगर आप कहीं घूमने के लिए आ रहे हैं, कोई आपको तंग नहीं करने वाला है नाजायज़ तरीके से किसी ज़रूरत के बगैर, ठीक है। अगर आप कोई आ रहे हैं और आप लोगों को तंग करें, ऑफ कोर्स आपको लोग भी तंग करेंगे। लेकिन अगर आप कोई किसी को तंग नहीं कर रहे हो और आप बस अपने काम से काम रख रहे हो, अपना घूम रहे हो, अपना फिर रहे हो, अपना खाना खा रहे हो, तो कोई नहीं तंग करने वाला है। And look at this view. This is probably top 10 world view of a beach on a cliff. It's like National Geographic type stuff. This is Pakistan, and it's very cheap to come here compared to what this would cost on the coast of California or the coast of somewhere else in America or Canada or somewhere else. So it's definitely something to take in consideration when you plan your next family vacation. Come spend time in Pakistan, explore, see, find your roots, figure out who you are. Where did you come from? Who are your ancestors? Why were they here? What did they believe? Who were they? That's the only way you're going to figure out who you are. And this kind of journey of traveling is as much about finding yourself as it is about finding the world and seeing the world. So, I think it's an incredible journey of life, and people are always trying to figure it out. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है यार? ये तो ग्वादर तो बहुत प्यारी जगह है। नीचे कैसे जाते हैं? उधर से बीच का रास्ता है। तो आप लोग यहाँ पे लोकल्स हैं, तो मैं आपको थोड़े से सवाल पूछ सकता हूँ? यहाँ पे हर वक्त लोग मुझे बोलते रहते हैं, मैं जब बोला लोगों को मैं ग्वादर आ रहा हूँ, तो हर वक्त मुझे लोग बोलते हैं तुम पागल हो, ग्वादर क्यों जा रहे हो, ग्वादर क्यों जा रहे हो? मुझे हर वक्त सब लोग मुझे बोले यहाँ पे सिक्योरिटी इशू है, सिक्योरिटी इशू है। अब क्या सिक्योरिटी इशू है? यहाँ पे अमन ही है, कुछ नहीं है ना। मैं ड्राइवर को भी समझा रहा था कि अगर आप कोई ज़्यादा बड़े बंदे हो या कोई आपसे नफ़रत करता है, तब आप गार्ड लेके घूमो। जैसे कराची में भी गार्ड लेके लोग घूमते हैं, तो वहाँ आप भी गार्ड लेके घूमो। लेकिन अगर आप
आम बंदे हो तो कौन आपको तंग करने वाला है? कोई नहीं। ऐसे तो बंदे ही नहीं। यहाँ पे हर बंदे से मैं मिला हूँ, सलाम करते हैं, हाथ मिलाते हैं, अच्छी तरीके से बात करते हैं। खुशी है कि लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, ग्वादर की तरक्की हो रही है। तो आपको क्या लग रहा है ग्वादर में? आप ग्वादर से ही हैं, यहीं पैदा हुए थे, तो ग्वादर से यहाँ पे तरक्की हुई है? तरक्की हाँ। तरक्की हो रहा है थोड़ा बहुत। नहीं, नहीं हुई है। नहीं, यहाँ का तरक्की तो देखा ही नहीं है, बस हो रहा है। हो रहा है। पोर्ट का क्या सीन है? चलने वाला है? और काम है पता नहीं। करते क्या हो तुम? दराज ऑफिस, ऑनलाइन शॉपिंग। दराज? डिलीवरी बॉय हैं सही है। जी। तो यहाँ पे ई कॉमर्स का सीन है, क्या? जैसे दराज और ये सारे चलते हैं यहाँ पे? हाँ, चल रहे हैं, थोड़ा बहुत गुजारा हो रहा है। हाँ। और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी आ रही है कोई? हमें ये चीज़ पता नहीं है। सही है, शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। चले, हम आगे थोड़ा सा, मैं पहले तो आगे चाहता हूँ। So I know some people don't really want to engage because they see me as an outsider. Maybe I have a hidden agenda, but my agenda is to share the beauty of Pakistan and its people, so that overseas Pakistanis want to come back and visit their homeland, because this is where I came from. Not Gwadar, but Pakistan is where I came from. And even though I grew up in America for the vast majority of my life, and I live there now, that doesn't mean I don't have any connection with my homeland and where I came from, and see and want them to improve Pakistan, make it a better place. You have to keep working. I mean, look at the beauty of this landscape here. I'm afraid to go too close to the cliff edge because some of it is unstable. Yeah, it's a jagged edge, and then you hang off and you can go down. I don't know how I would get back up. If I would have to get to the beach and walk along the beach to get to the stairs and then come up the stairs. Okay, so it's not the end of the world, but you'd probably break a few pellets on the drop down. It's just peaceful to sit here. Amazing. When I walk over to the park, climb the view up there, but man, this is a beautiful, beautiful place. I feel like yes, there's a bunch of trash, and I would hope that soon they put a bunch of trash receptacles and have some sort of park service. Parks department used to be enabled to take care of the parks. This should be a park, maybe even a national park. Hammerhead National Park.
climbing the tower for the sunset view that is not to be because there were clouds today. There were also clouds yesterday. But man, this view is getting better and better. I can't wait to show you guys in a second. This is a view. Running a business between the United States and Pakistan, then you know how complicated things can get. Contracts, payments, partnerships, compliance in two completely different legal systems. At Tariq Law, we work with entrepreneurs and companies doing business across borders. We work with you to draft contracts, negotiate favorable deals, protect your interests, and plan for long-term growth on both sides of the globe. Whether you're launching a product, signing a supplier agreement, setting up a US entity, or expanding into Pakistan, we are your legal partner. Tariq Law, where cross-border business gets real support. Visit tariqlaw.com/Pakistan to book your strategy session today. It's checkout day for me at the PC here in Gwadar, and man, was this trip absolutely incredible. This is a life-changing trip. 2 days from Karachi to Gwadar, and man, if you are ever looking for a beach resort town without any people, this is your place. Place to just come, rest, and relax. There's no shopping, there's no movie theater, there's no here and there markets. There's just calm, relaxing vibes, the beach all around, really nice people. The food is pretty good, but it's not Karachi good, but it's still good, and lots of opportunities. So I would highly recommend people come visit Gwadar. You can see I'm wearing the same green shalwar kameez that I was wearing a few days ago when I first arrived, but that's just because I forgot more kurta shalwars or kurta pajamas, and now I am getting ready to head back to the airport to a flight back to Karachi so that I can meet my kids and spend some time cuddling with my daughter. So looking forward to it. On to the next adventure, and I will show you going back to Karachi how that is on this ATR flight back to Karachi for this morning from Gwadar to Karachi. Look forward to talking to everyone soon. See you back in Karachi or see you back in New York. The countdown begins because today is Wednesday, and we will be back in New York next Wednesday. So looking forward to it after 2+ months of being away for the winter. It's going to be good to be back home, but looking forward to it, and hopefully a safe trip back from here in Gwadar back to Karachi. So we just left the compound that includes the whole mountain up there, and that has the port and the PC in it. And these are, but these are army barracks. They're blue from the sky,
and I can show you them. Blue is an interesting color because they're protected against thermal attacks. But he said the army barracks and the army folks showed up about a year and a half ago and basically took control of the cliff and the mountain, and they've been providing lots of security. Oh, there's this cricket studio. They've been providing lots of security for the area, and they've kind of taken control of the mountain and put a army base up there, which is very interesting because that shows that the army is very serious about the security situation up in Gwadar, and they want to protect the Chinese who are making investments and even the Pakistanis who are making investments from here. And so definitely a very interesting development. I didn't know about this before. I'm sure other people knew about this, but the fact that if the Pakistan army has a base up here, that means that they are taking the security situation now very seriously and will do whatever it takes to ensure that there is a safe and secure environment for the Chinese and the Pakistanis who are doing business here. From here in Gwadar to Karachi. So, looking forward to this flight. The airport looks beautiful. I wish Karachi had an airport like this. Maybe one day. Chinese have done a great job. I have my boarding card, and it is time to go through security here. It's light traffic. Very, like 40-50 people on this plane. Should be a fun trip. Security again. Security check 2. Ticketing. Beautiful airport.